गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। तो इस वीडियो में हम लोग सेल साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द सेल साइकिल विच इज द इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ सेल. द सेल cycle is a series of events that takes place in the cell leading to the duplication of its DNA and the subsequent division of the cells to produce two daughter cells. A cell cycle consists of two phases, a non-dividing phase called interphase and the dividing phase is called M phase or simply mitosis. The two daughter cells produced from the mother cells are relatively small with a full-size nucleus but relatively little cytoplasm. The cell is said to be in interphase. जब सेल आपका डिवाइड करता है और डिवाइड के बाद डॉटर सेल्स बनते हैं तो डॉटर सेल्स में बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स की कमी होती है, प्रोटीन्स की कमी होती है। तो इंटरफेज में इन्हीं ऑर्गेनल्स और प्रोटीन और डीएनए का सिंथेसिस होता है। इसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इस फेज में सेल्स डिवीजन के लिए तैयार होता है। राइट, ड्यूरिंग दिस फेज the cell prepare for the next cell division and grow to the same size as their mother cells. Since no change in chromosomes is visible extremely during the interphase, formerly it was called resting phase. This interphase is further divided into three phases. First phase is called G1 phase or first growth phase. In first growth phase, RNA and protein are synthesized and the volume of cytoplasm increases. This we call growth of the cell. Mitochondria in animal cells and chloroplast in plant cells divides. These two organelles have their own DNA. In late G1 phase, all cells must follow one of the two paths. They may either withdraw from the cell cycle or enter the resting phase or start preparing for the next division by entering the next synthetic phase that we call S phase. So, in G1 phase, the cell performs its normal metabolic function including protein synthesis, energy production and waste removal. Now, after the completion of G1 phase, synthetic phase begins. Synthetic phase is a phase in which more DNA is synthesized and chromosomes are duplicated. The S phase is the most crucial part of interphase where the cell replicates its entire DNA. क्योंकि डॉटर सेल्स में डीएनए की कमी होती है, डीएनए डिवाइड की कमी होती है जिनका सिंथेसिस करके डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, लेकिन इस फेज में पर्टिकुलरली डीएनए का सिंथेसिस और क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन, द सेल्स डीएनए इज डुप्लीकेटेड creating two identical copies of genomes. Chromatin condensation, the replicated DNA begin to condense forming visual chromosomes. यहाँ पे DNA कंडेंस करता है और क्रोमोसोम्स दिखने लगता है, क्योंकि आपको पता है कि क्रोमोसोम्स इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. इन रेस्ट टाइम दे रिमेन्स एज अ क्रोमेटिन नेटवर्क इन न्यूक्लियस. Next is centriole duplication. Centrioles which play a crucial role in cell division are also duplicated. Next is second phase is G2 phase. This we call second growth phase. This is the shortest growth phase in which RNA and protein necessary for cell division continue to be synthesized. Now,
the cell is ready to undergo cell division and enter the dividing phase of the cell cycle. After dividing phase gets completed, the newly formed daughter cell enter into interphase again, and in this way the cell cycle go on and go on. In this phase, cell organelles like mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulums are replicates. The cell checks for DNA damage and ensure that all chromosomes are correctly replicated. This is your cell division. So cell division continues in three major steps. First is unwinding, second primer binding, and third new strand synthesis. The DNA double helix is unwound by enzymes such as helicase, breaking the hydrogen bond between the base pair. This we call unwinding of the DNA. A short RNA primer is attached to each DNA, providing a starting point for DNA polymerase to synthesize the sequence of DNA. RNA polymerase adds new nucleotides to the primer using the existing DNA strands as a template, following the base पेयर rules. तो इस तरह से आपके डीएनए का सिंथेसिस होता है. इसमें आरएनए पॉलीमरेज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल which arrange the nucleotides in particular sequence. Now, this is a regulation of cell cycle. The cell cycle is tightly regulated by a series of checkpoints that ensure proper DNA replication and prevent uncontrolled cell growth. These checkpoints monitor the cell's progress and ensure that each step is completed correctly. If DNA damage is detected, the cell cycle may be arrested to allow for repair or include apoptosis. Growth factor and other signaling molecules can influence the cell cycle progression, promoting or inhibiting cell division. Now, uncontrolled cell division due to defect in the cell cycle regulations can lead to the development of cancer. यदि डीएनए के सीक्वेंस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है तो इसके कारण से कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी रहती है. Importance of cell cycle, as I told you, the cell cycle is very important part of the cell division. The cell cycle is essential for all living organisms as it provides the mechanism for growth, repair and reproduction. सेल साइकिल के कारण ही आपका ग्रोथ होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रिप्लेसमेंट. जो सेल्स आपके डेथ कर गए हैं उनका रिप्लेसमेंट होता है. जो सेल्स डैमेज कर गए हैं उनका रिपेयरिंग होता है. इंजरी हो गया है उनका रिपेयरिंग होता है. और रिप्रोडक्शंस में भी एक अहम रोल प्ले करता है सेल साइकिल, क्योंकि सेल डिविजन्स के कारण ही स्पर्म और एग का फॉर्मेशन होता है. और आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote continue to grow with the help of cell division. So this is all about in this video guys. यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.